students, welcome back to LPT's official YouTube channel. Now, this will be a very candid conversation because today we have with us Roshni Rajani. She is ex LPTer and now she is in Symbiosis Pune in her last year of her BA LLB. So, hello Roshni, how are you? Hi, thank you so much for having me here, Priyal. I'm great. I'm all good. Okay, so Roshni, to begin with, tell us the first question. Like, the students must be guessing right now is was Symbiosis always your plan A or was it your plan B? Honestly, obviously not. And anybody who starts with their law journey, whoever wants to get into law, they obviously want to get into NLS. Everybody wants to get into NLS, right? So, CLAT was obviously my first choice. And honestly, before that, before I got into law, getting into DU was my first choice, to be very, very honest. My first plan for college was DU. But then I got into law, and then I always wanted to do CLAT. But when the results came out, I didn't really score that well as I was hoping. So I was getting Shimla, NLU Shimla, and a lot of people who were my seniors who were studying from NLU Shimla, and a couple of other seniors, after having a conversation with each of those people, they told me that it's better that you go to Symbiosis. Now, moving ahead. Yeah. So tell us about the life. Oh, to all the students who will be watching this, how's life at Symbiosis Pune? Now again, Pune ka 47 plus years of legacy it has. And definitely we also suggest the Pune campus only when it comes to Symbi. So tell us how was your journey till now over there? Definitely. So, my Symbiosis journey has been great. Although it was not always great since the beginning, I was not happy, obviously, because not with the college, but just with myself. Because when I got into Symbiosis and I saw people around me going into, Delhi, National Law University, Delhi, and Bangalore, I had friends across, right, in Symbiosis, not in LPT, my bad. So in law prep, I had friends who got into various good national law schools. And I was always in the beginning, in the first month of my law school of Symbiosis, I was always comparing myself that why am I not there? Like, why am I not in NLU Jodhpur or NLU, Patiala? I had friends everywhere and I was very, very unhappy, not with the college, but just with the fact that I am not there. So it was that. So initial first month I was just constantly cribbing, but with time I realized, and in over 5 years I've realized a lot of things. So I'll articulate those things later on ahead in the interview. But right now, let's start from the first year. So first year mein, within the first 2 months, there is your freshers. Not exactly freshers. There's an event called Symptoms or Symphoria. The names keep changing, but Symptoms bolte hain. Hamare time mein it was Symptoms, and because Sim, right? Symbiosis. Right. So Symbhav is our fest, is our annual college fest, and Symptoms, now called Symphoria, is our internal, like within the college fest, where it's just for first and second year students, and it's like you get to interact with your seniors there, and there are a lot of events that happen in the fest. It's I think it lasts for over 3-4 days, or sometimes I think even a week. So there are acting events, there are dancing competitions, there's a hogathon, and there's sports events, there's a pop culture quiz. So there's like a lot of things happening. Like, so when you interact with college seniors, when you see that your college seniors have made a movie, some of your college seniors have, are into modeling, some of them are actively doing theater. Like one of my batchmates right now, uski movie release ho rahi hai YouTube pe. So that's how, I mean, why I'm telling this, it's different from law, but you see कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चों में इतना इंथुजियाज्म होता है, इतने सब में अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है डिफरेंट फील्ड्स में. तो जब वो अलग अलग इवेंट्स होते हैं ना, कि थिएटर भी हो रहा है एंड एक्टिंग भी हो रही है, डांस भी हो रहा है, म्यूजिक इवेंट्स भी हो रहे हैं, तो उस माहौल में ना आई वाज सो हैप्पी. बिकॉज मैंने DU क्यों विजुअलाइज किया था अपने लिए, मैंने देखा था कि DU के फेस्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई देयर इज नो बॉन्डेज कि यू जस्ट हैव टू स्टडी. So when I saw that, I was relieved and I was so happy that this college really promotes extracurriculars like anything. और वो भी अपने second month से. So September I think मेरा admission हुआ था, 3rd September को result आया था, and उसके बाद October November में ही fest हो गया था. So October was essentially my first month of college, and November में this intra-college fest had happened. So it's like a great opportunity to explore yourself as well, right? कि सिर्फ academics हो गया, now you got into the college, now you have so many extracurriculars where you can actually pick what's best for you, right? In a way you are exploring yourself only.
Exactly. Right. Apart from academics, there are so many, and it also lightens you a bit. Now, you just mentioned, right, you were occupied with the fact that why I didn't got into that. So, this was a perfect distraction for you, right? Turned out that way only. Exactly. So there was everything. There was a debating society, there was a theater club, there was, writing, there was literature. So all of that, when I saw all of that, I was just mesmerized. And then our first moot came up. And for first year students, there's an intra moot where they decide our ranks. And I think this is a system in every college, in most of the colleges. ऐसा ही होता है. And in first year, it's compulsory. Because after first year, it's not compulsory for us to participate in these intra moot court competitions. बट फर्स्ट ईयर में आई थिंक इनिशियली सबको लग रहा था कि क्यों फोर्स कर रहे हैं, हमें अगर मूट नहीं करना है तो हम क्यों करें, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स फोर्स क्यों कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग. बट इन हाइंडसाइड ऑल ऑफ अस रियलाइज दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू गिव अस द टेस्ट ऑफ मूटिंग एंड देन हैव एन इन्फॉर्म्ड चॉइस कि हमें आगे करना है कि नहीं करना है, राइट. सो that happened. Tagline सब try करो फिर सही चुनो, actually worked well for you. Exactly. So exactly. but जब कुछ try नहीं करेंगे, you will not know exactly whether it's meant for you or not, right? Yeah. Okay, now the next question would be, how's the faculty over there, right? कैसा experience रहा आपका dealing with the faculty? Were they supportive? Similarly, how were your seniors? And then फिर juniors आए, so how was it? Okay, so faculty सबसे पहले I'll address that. Faculty, I would say that it's great. From I think जो rank अभी Symbiosis की rank 5 से third भी हो गई थी अभी last year, we were rank 3. So I think around that time we had the best faculty pool, and to be very blatantly honest, I would categorize the faculty in 3 categories. One is like the top notch most amazing faculty जो आपको क्लास के पहले प्री रीडिंग्स देंगे, क्वेश्चंस देंगे, क्लास में होमवर्क देंगे कि आपको नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आना है, एंड देन क्लास में एक्टिवली डिस्कशंस होंगे, एंड पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे वो लोग. दे विल एक्चुअली स्टिम्युलेट योर ब्रेन, दे विल गिव यू फूड फॉर थॉट, दे विल मेक यू थिंक, दे विल मेक यू एनालाइज, there will be actually some good discussion on the topics that we're supposed to study and learn. And then फिर वो post readings भी देते हैं class के लिए. And then and वो आपको ऐसे important questions नहीं बताएंगे exam से पहले. They will actually want you to learn and go through the entire syllabus and figure out, मतलब not just from an exam point of view कि exam में क्या important आने वाला है वो बता दो, ऐसा नहीं करते. I will categorize them, those kind of teachers, as a top notch faculty which I have experienced in law school. Then the second category would be गुड टीचर्स वो हैं जो मतलब प्री रीडिंग्स पोस्ट रीडिंग्स कभी कभी दे देंगे, क्लास में भी अच्छा डिस्कशन होगा, लेकिन दे विल स्टिक टू द सिलेबस, एंड कभी अगर एक्स्ट्रा डिस्कशन हो रहा है तो करा देंगे, बट बिकॉज उनके पास भी एक लिमिटेड क्रेडिट सिस्टम होता है ना कि 60 आवर्स फॉर टैक्सेशन लॉ, तो उनका फोकस वो रहता है कि सिलेबस कवर हो जाए और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें कवर हो जाए. बट अगर हम थोड़ा सा भी डाइग्रेस हो रहे हैं तो शायद उसे कर्टेल तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कि स्टिकिंग टू सिलेबस बेसिकली, एंड दे आर गुड. वो पीपीटी लेके आएंगे, जो दे रखा है, जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाया, हो गया. I would consider them as good. And then the last category I would say, I'm being very blatantly honest, they just come, they discuss जो भी syllabus है, जितना मतलब जरूरी है उतना किया और फिर चले गए. So and this is applicable across universities. This is not just Symbiosis. All sorts of faculties are there, right? True. So, but I would say statistically I might be wrong, but 80% in my opinion जो मैंने देखा है अपनी जर्नी में, 80% of the faculty comes in the top 2 categories, top notch and good. Very like 1 or 2 professors कभी कभी जो होते हैं ना वो ऐसे हैं. And right. And how were your seniors supportive, like a take on them? क्योंकि बहुत important role प्ले करते हैं when you go into any school or in any college for that matter. जो seniors है उनका support होना, gel up करना बहुत crucially role रहता है उनका, because it messes with your head also, right? You have to be comfortable. See, it's a new place and you are someone जो अपनी नई city छोड़ के नई city में जा रहे हैं, बहुत सारे. Then there are cultural differences as well. We'll come to that also. Yeah. Were there any cultural differences which I might feel पुणे जैसी city में नहीं होंगे, but what was your experience over there? Okay, I'll address your statement with regards to senior and having a social circle, because very rightly said, जब आप अपनी city से बाहर जाते हो, you have to find a home away from home, because then it's very difficult to survive alone. A lot of people I saw in my batch also were struggling with loneliness because either they were introverts or they had trust issues with having their own friend circle. It's very difficult. I completely agree to that, and I think the best way to cope up with that is to find your circle.
How do you do that? Be part of societies, be part of clubs. So I'll give you my example. I was very enthusiastic the moment I came out of that cribbing circle. I told you ना, जब first month में मैं बस crib करी थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे. The moment I came out of that, मैंने उस फेस्ट में, जो फर्स्ट मंथ में हमारा फेस्ट हुआ था, आई पार्टिसिपेटेड इन एवरी सिंगल थिंग. मुझे गाना गाना नहीं आता है, फिर भी मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया. Because I was so enthusiastic. I was like, I want to do everything. So because of that energy, I got into a lot of student bodies, and third year mein jaake I became the head of the literary cell also. It was called the Law Hawks cell. I became the co-head of that cell. तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे स्टूडेंट बॉडीज में पार्ट लिया. फर्स्ट ईयर में आई वाज इन स्टूडेंट वेलफेयर कमिटी. तो जब आप ऐसे स्टूडेंट बॉडीज में पार्ट लेते हो ना, यू मीट अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. हाँ, अनदर गुड थिंग अबाउट सिम्बाइसिस इज कि जितने भी स्टूडेंट बॉडीज के आप पार्ट बनते हो ना, बिफोर यू गेट सिलेक्टेड इन दीज बॉडीज आपका इंटरव्यू होता है. सो मैंने अक्रॉस लास्ट 5 years इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं ना कि नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आप मेरे सामने कोई स्ट्रेंजर को लाके रख दो, मुझसे कुछ भी पूछ लो, आई विल be very confident in answering those questions, because that really gives you that command over your it really gives you the ability to think on your feet and give your answers, be confident in front of a stranger, have a flow of thought, and actually be able to articulate your thoughts. So that's something really wonderful, although a little different from away from the question that you asked. But yeah, that interview aspect is really amazing. So coming back, be part of such societies. So first year में student welfare committee हो गई, then animal liberation, it was specifically for animal cause के लिए काम करती थी. So animal liberation committee I was part of. Then constitutional law club बना था हमारे college में second year में, so I was part of that also. Volleyball, so I was part of volleyball team also for a very short while. एक semester में मैंने volleyball भी खेला था. So I have those sports वाले friends also. I have SK mooting friends also. Okay. So because of all these things, I have a very good friend circle. ऑल्सो एक इनिशिएटिव है हमारे कॉलेज का ही, मेंटर मेंटी सिस्टम है. सो आपको अपने फर्स्ट ईयर में एक मेंटर अलॉट किया जाता है, एक फैकल्टी मेंटर और एक स्टूडेंट मेंटर. तो वो जो स्टूडेंट मेंटर होता है वो जनरली 4th और 5th ईयर का स्टूडेंट होता है. तो कॉलेज अपनी तरफ से तो एक आपको एक सीनियर पकड़ा देती है कि देखो ये है सीनियर, अब कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इनसे बात करो. सो ऐसे करके एक जस्ट टू ब्रेक द आइस, एक सीनियर आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में. आई थिंक थर्ड ईयर में भी होता है, बट आई एम नॉट श्योर. फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में तो डेफिनेटली होता है. सो आई हैड वन सीनियर, एंड तो वो सीनियर आपसे मतलब यू कैन आस्क एनीथिंग टू देम. सो ऐसे करके एटलीस्ट कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू समवन फ्रॉम देयर एंड, एंड देन इट्स योर ड्यूटी टू एक्चुअली एनलार्ज दैट सर्कल, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस. एंड मैंने आपको मूटिंग का भी बताया, वो बिडिंग सिस्टम होता है. सो ऐसा नहीं कि प्रियल एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स तो चलो हम मूट कर लें, ऐसा नहीं है. अगर प्रियल की रैंक 1 है और मेरी रैंक 10 है तो हम दोनों साथ में शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रैंक 2 वाला प्रियल को लेके चला जाएगा, राइट. सो ऐसे करके मूटिंग भी मैंने अक्रॉस जूनियर्स के साथ करी है, सीनियर्स के साथ करी है. And like I mentioned, I was the co-head of the literary cell. तो when I had that position, तो तब मैंने अपने जूनियर्स के इंटरव्यूज लिए. तो जब आप इंटरव्यूज लेते हो तो जूनियर्स आपको याद रखते हैं कि अच्छा शी इज द हेड ऑफ दिस दिस शी इज पार्ट ऑफ दैट. जब आप एसबी में होते तो जूनियर्स आपको, भले ही आप जूनियर्स को नहीं जानते, बट जूनियर्स आपको जानते हैं कि ये तो वो है, सीनियर है, वो ऐसा, राइट. एंड व्हेन यू सो ऐसे करके आपका सर्कल ऑटोमेटिकली बड़ा होता है. दैट इज व्हाई आई थिंक इन माय कॉलेज लाइफ दीज स्टूडेंट बॉडीज हैव प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज ऑल माय क्लोजेस्ट एंड बेस्ट memories and best friendships have come from this. So इससे आपको juniors भी मिल जाते हैं और आपको seniors भी मिल जाते हैं. Amazing. Sounds so fun. Coming to the another point, so this was all academics oriented. Yes. What about the fest? Right, this must be a question that I should address on behalf of all the students who are aiming for it. तो फेस्ट का क्या सीन है, और कोई एक्स्ट्रा इंट्रा कुछ होता था, एक्टिविटीज होती थी अपार्ट फ्रॉम academics? We are just talking here about the non-academic wing. So college fest इस सिम्बाइसिस का जो इंट्रा कॉलेज फेस्ट है वो तो सिम्फोरिया जो मैंने बताया, दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स. इट्स लाइक अ आइस ब्रेकर फॉर देम कि आप इंटरेक्ट करो, आप मजे करो, हमारे साथ खेलो. देयर इज अ हॉगथॉन आल्सो. देयर इज लाइक वो क्या होता है, वेयर यू गेट द पजल एंड यू गेट अ piece of information and you have to find that. I'm forgetting the name of that thing. Okay. So there's a game, I'm forgetting the name. It's a very common. Anyway, so there are a lot of games. तो वो तो इंट्रा फेस्ट है, that's only for first years and second years. तो एक बहुत अच्छा आइस ब्रेकर की तरह वो एक्ट करता है.
That is that. Hmm. And once you become part of these student bodies, उसको हम student advisory board बोलते हैं. So all the students of the student advisory board, they go for an outbound activity, जो कि हमारे main campus में होती है. And that main campus is on Lavale Hill. It's a very beautiful place. तो वहाँ पे जब आप जाते हो, there are activities. कभी तो अभी जो last outbound हुआ था, that happened on a fancy resort where there were a lot of activities. So those kind of outbound activities, they also act like a very good icebreaker for people who don't know each other. So you get to interact with each other. This is within college, just for college people. Now coming to the main annual college fest, that is Simbhav. That happens every year. And उसमें जब that happens in March or April, लेकिन उसका काम चालू हो जाता है दिसंबर से. I think दिसंबर के पहले से भी हो जाता है. But December is the peak time where form आता है कि there are different committees for the fest. There's PR committee, there is cultural committee, ये सारे marketing committee, ये major committees हैं जो सबसे important ones होती हैं, because PR is very important. वो पूरा social media, SOCMED, वो सारा आपका social media संभालते हैं, right? And उसके लिए shootings होती हैं, reels बनती हैं, photography होती है आपके social media page के लिए. Then marketing is also a very fun committee, जहाँ पे you go to different colleges within Pune. Bus, there's a college provides us a bus, and you go in that bus, you go to different colleges and pitch the fest कि ये हमारा फेस्ट हो रहा है, आप आ जाओ. So that is also another wonderful way to interact with other law college people. Because Pune में there's ILS also, which is a very good college of MHCT. ILS is Indian Law Society, Pune. So, and there's DY Patil. There are really good colleges within Pune. हाँ, Bharati Vidyapeeth also. There's Flame University. There are a lot of good colleges in Pune also. So हम उन college में जाते हैं. This also helps you with your own networking, right? तो आप दोस्त बना रहे हो, आप connections बना रहे हो, आप उनका number लेके आ रहे हो, because आपको brochure भेजना है, आपको उनसे बात करनी है. You're in touch with them, right? So that is another wonderful opportunity. This is pre-Simbhav. This I'm telling you, Simbhav fest के पहले ही आप इतना fun कर रहे हो, right? So that happens. SOCMED जो PR team है, you shoot reels with them. Simbhav movie बनती है हमारी. So Simbhav का theme reveal movie बनती है. जब theme हम decide करते हैं, so every year there's a different theme. तो theme reveal की movie बनती है. So sometimes you get to act in that, sometimes you get to shoot in that. So I learned video editing just by being part of the PR team. So मैंने volunteer किया था PR के लिए. मैंने वहाँ पे video editing सीखा, मैंने Canva सीखा, मैंने सोशल मीडिया में कैसे ब्रांडिंग स्ट्रिप्स क्या होती हैं, किस तरह का कलर थीम होता है, कलर पैलेट कैसे डिसाइड होता है. आई लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. एंड देन मैंने वहाँ पे फोटोग्राफी सीखी, ISO क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है कैमरा की, मैनुअल मोड में कैसे फोटोग्राफी होती है. आई लर्नड एवरीथिंग विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी थ्रू कॉलेज. और फेस्ट के टाइम पे कॉलेज ही रेंट करता है कैमराज और आपको प्रोवाइड करता है. यू जस्ट हैव टू एक्ट एज अ फोटोग्राफर. इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड इन सबकी कमिटीज के स्पोर्ट इवेंट्स भी होते हैं. सो विद इन कमिटीज फेस्ट के पहले तो स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, तो आप अपनी कमिटी को रिप्रेजेंट करते हो. वॉलीबॉल हो गया, देयर इज क्रिकेट, देयर आर different matches that happen. So just before college, before the fest, it is a wonderful environment. और जब एक्चुअल फेस्ट होता है तब तो इट्स क्रेजी, बिकॉज देर आर आर्टिस्ट, देर आर डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट एक्टिविटी, बट उसमें ना देर आर डिफरेंट कार्स एंड डिफरेंट बाइक्स विच कम, एंड the entire road is blocked, and then these very like fancy bikes and cars, they come and they display. So why am I forgetting? It's like the major event of Simbhav. I don't know. Then there's a battle of war of DJs. Then there's a fashion show. So a lot of things happen. There's a stand-up event. So a lot of things. Even Anubhav Singh Basti had come before my time. Then there was Rahul Dua, and Mohit Chauhan had come last. Famous personalities. So yeah, they come and perform. I feel by this time many of the students must be commenting that इतना सब हो रहा है तो पढ़ाई कब कर रहे थे ये लोग. So did you ever get the chance to even study the fact that इतने सारे चीजें you just mentioned कि अप्रैल में से you used to start preparing for the fest. अप्रैल में फेस्ट होता है, दिसंबर से so almost 6 months, 5 to 6 months you're giving just to the fest. So how
was it manageable, your academics and this as well? The fact that हम 4 महीने पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसलिए मैनेजेबल है ना. अगर हम 2 महीने पहले प्रिपेयर करेंगे तो तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट बिकॉज इट इज सो स्प्रेड आउट, इट्स सो इवनली स्प्रेड आउट कि हम अपना पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं और Balanced approach. it's a balanced approach. That is why the 4 months of prep, right? Otherwise, so it won't be possible to. Hospitality की भी टीम होती है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करना, खाना, उनका रहना, everything is managed beautifully and very very pre-planned. So like for 4 months from law students you turn into event management students. It's fun. We are like part-time working for college and part-time we are students. So it's nice. Okay, amazing. So now Roshni, do tell everyone of them who are watching this video that regarding the placements, about the exams as well. But to begin with, the placement cell that comes. So how was your experience over there? Okay, so with regards to placements, we have a placement cell. It's called the Career and Professional Development Cell. Okay, they keep providing us with internships throughout our law school. First year onwards, first year में इतनी internships नहीं आती because in general law firms, like the big law firms, they don't want first year and second year law students. Why? Because we don't know drafting yet. First year में हम क्या पढ़ते हैं? हम sociology. I was a BA student, so history, sociology, law of torts, basics of contract. So हम लोग ये सारे जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, वो लॉ फर्म के पर्सपेक्टिव से इतने यूजफुल नहीं होते हैं. तो इसलिए लॉ फर्म इंटर्नशिप्स तो इतनी सारी नहीं आती हैं फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा? आपको एनजीओ इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी, सर्विस इंटर्नशिप मिल जाएगी, लीगल सर्विस अथॉरिटी की इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी, लिटिगेशन इज ऑलवेज देयर, राइट. सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स में भी अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको इन हाउस भी मिल जाएगी, बिकॉज इन हाउस वर्क इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट. सो कॉलेज फर्स्ट जैसा ट्रेंड है कि फर्स्ट ईयर्स को एनजीओ और लिटिगेशन में मोस्टली रोल मिल जाता है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ऐसा. लेकिन थर्ड ईयर से वी गेट रियली रियली गुड tier 1 law firms also. हमारे कॉलेज में ट्राइलीगल आया हुआ है, CAM, SAM, all these big law firms have come. Argus has also come. These are really really big. So the law universities only provide you for the internship, or you have to hunt on your own? How does it go over there? It's both. So क्या होता है कि कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये लॉ फर्म आई है और थर्ड ईयर में, जैसे थर्ड ईयर से बात करते हैं बिकॉज लॉ फर्म्स थर्ड ईयर से आती है, तो लेट्स से आर्गस हैज कम नाउ. उसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि दे वांट एन इंटर्न फॉर 3 months, let's say 1 month, because थर्ड ईयर में एक ही महीने का इंटर्नशिप ब्रेक होता है. दे वांट एन इंटर्न फॉर 1 month. लोकेशन इज दिल्ली एंड स्टाइपेंड इज लेट्स से 3K 5K per month, whatever. Whoever is interested, please fill the Google form. Now let's say 50 people fill the Google form for Argus. Now अब आर्गस जो है वो रिगरस सिलेक्शन प्रोसीजर करेगा. नाउ ओपनिंग्स भी वो मेंशन कर देते हैं, ओपनिंग्स आर 2 or 3. Okay. So even if 50 people apply, 2 or 3 people are going to get. But there are multiple law firms which are coming. And tier 1s तो चलो 5-6 ही हैं in general. But there are tier 2 law firms which come. There are tier 3 law firms which come. Right? There are small boutique law firms which come. So ऐसे करके a major chunk of students do get good internships through college. राइट. बट आप खुद भी, बिकॉज अगर मान लो कि मैं हूँ, मेरा CGPA, बिकॉज दीज लॉ फर्म्स शॉर्टलिस्ट मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPA एंड योर CV. So let's say I am someone who has a 6 CGPA for whatever reasons. Let's say I have some medical reason, उसके कारण मेरा CGPA अच्छा नहीं रहा है और थर्ड ईयर में ही लॉ फर्म आ गई है, तो अब जाहिर सी बात है वो मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज उनका शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसीजर यही है कि 6 CGPA को पहले ही हटा दिया, राइट. तो इन दैट केस अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू हंट ऑन देयर ओन, राइट. और वो मिल जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. वो लिंक्डइन से मिल जाएगा आपको, कोल्ड ईमेलिंग से मिल जाएगा. यू विल गेट एन इंटर्नशिप, दैट्स फॉर श्योर. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट येस, प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ से. व्हेन पीपल कंप्लेन ना कि इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, वो क्यों नहीं मिल रही है? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. ऐसा नहीं कि कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है आप वो भी देखो ना. कि अगर आर्गस आ रही है, ओपनिंग्स ही 2 हैं, तो 300 लोगों को कैसे मिलेगा? 120 BA के बच्चे हैं, 180 BBA के बच्चे हैं. सो नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट, दैट्स अ established fact. But internships अच्छे, मतलब जितने मेरे बैचमेट्स हैं हम सब ने अच्छी इंटर्नशिप्स करी है. So this is about internships in when you are in college. Now let's talk about placements. So I am in my 10th semester as of now. Technically just 9th अभी खत्म ही हुआ है, तो it's somewhere between 9th and 10th semester, and I have been placed 6 months before. So जैसे ही मेरा 4th year खत्म हुआ, my 4th year ended in July, and on August 25th I had a job in my hand. Okay. So I would say that if you have worked really hard in your college,
आपने इंटर्नशिप्स अच्छी करी हैं, आपने मूट कोर्ट्स अच्छे से करे हैं, आपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है, मतलब आई वुड से कि अगर आप 8 अबव सीजीपीए मेंटेन कर 7.5 अबव सीजीपीए मेंटेन करके रखे हो, सो शॉर्ट लिस्टिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी. व्हेन 100 पीपल आर अप्लाइंग, देयर इज अ गुड चांस कि वो टॉप 50 में आप आ जाओगे अगर आप अबव 7 सीजीपीए होल्डर हो. फिर उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन का राउंड, हर कंपनी का प्रोसीजर अलग होता है. फिर जब आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, उसमें 50 में से वो 25 बच्चे लेंगे. फिर 25 बच्चों में से 3 पैनल्स आएंगे जो अलग अलग इंटरव्यू लेंगे. सो 3 पैनल्स में से 3 लोग सिलेक्ट होंगे. तो जब फाइनली वो 3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, to make sure that you're within those 3 people, you have to be very good with your speaking, communication skills, with your knowledge and your people skill. Because जब interview होता है, जब personal interaction होता है, they are going to judge you on every single aspect. So it's just that companies and law firms and boutique law firms, every political consultancies, every kind of a company does come to college, right? It's upon you that how you take it, how well prepared you are. So yeah, I think I would say that the placement scene is really good. But again, if you're holding like a 6 CGPA or a lesser CGPA, then It will you be can't tough. really blame the institute. Right. It's totally upon you. Academics, I feel, is definitely in the hands of the student only. From day one, it's upon you how well you score, and even no matter how many distractions are there, it's totally upon you how well you do in your academics. Because eventually, you are there for that only. Yeah. Right. Your priority should be set from day one. So with regards to cultural differences, yes, there are going to be cultural differences. Why? Because people from across the country are coming, and not just country. Symbiosis में there are people from NRI quota भी है. हर college में ही होता है, I think. तो there are a lot of people from the UAE also. Mostly UAE. Foreign nationals में जो मैंने देखा, NRI students are mostly from UAE. So Dubai के इधर उधर के UAE के, you'll see a lot of people. And there'll be South Indian people, there'll be people from the Northeast. So it's a mix. It's a very cosmopolitan place to be in, and I think उसमें problem नहीं होता है. It's a win-win situation. Like, Yeah. you get to know, I feel, Yeah. If you're curious, if you are really someone who's okay with okay with some people being different from what you are, because there are going to be differences, cultural differences. There are going to be a lot of different kind of people around you. And I think it is very important in a holistic development for as a person, you require that in order to grow. So I have a very diverse friend circle, and even जब हम mooting करने भी जाते हैं ना, so मैंने जानबूझ के ऐसे choose किए थे institutes जहाँ मैं moots करूँ. So I chose TNLU. So I had to go to Tiruchirappalli for my mediation competition. फिर मैंने SRM चेन्नई गई थी मैं. That was for a moot court competition. So I've been to Chennai, Tiruchirappalli, then I went to UPS Dehradun. And my goal was obviously to do the moot court and also to explore this. Right. So I've like traveled across, and because of internships also. So internships मेरी majorly Bangalore, Delhi, Mumbai में रही हैं. And moot courts की वजह से I've traveled to Aurangabad, MNLU Aurangabad. I have traveled to TNLU Trichy. I have traveled to NLU Delhi. I have traveled to SRM Chennai, UPS Dehradun. So across, I've been All to NLU, while learning and enjoying. all while learning and enjoying. And जो TN कहाँ से देहरादून में I won the best speaker award also. Okay. So cash prize with house का. I rented a scooty. देहरादून to Rishikesh is just like 1 hour away. मैंने cash prize से I rented a scooty. I was in Dehradun, in Rishikesh, bungee jumping from the highest point in Rishikesh. I did that. It was 5K, half of my cash prize. Did it. But worth it. It was worth it. I spent the entire prize money in Rishikesh. I came back and I was back to college within the deadline. It was wonderful. हाँ, and mooting के लिए college हमें reimburse भी करता है. So Okay. I So it's think sorted. it's very very sorted. Like it was like a college sponsored trip to Rishikesh and Dehradun. For You me. don't have to worry much about the finances. Like, Yeah. apart from this, so it's basically learning and fun together, plus being managed everything by the university, Yes, reimbursed yes. that way. Roshni, this was such a lovely conversation I had. I hope you enjoyed it too. I did. Thank you so much for. Thank you for having me. Okay.